Hello, my dear children. I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to do short and long question answers of a very beautiful poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman from your book Hornbill. So let's start. Question number 1. The poem begins in a conversational tone. Who are the two participants? What is the advantage of this method? So, you know very well the poem begins in dialogue form, and for dialogue, two people or two things are required. So, poet is asking here who are the two participants. So, the two participants are the poet and the rain. Poet makes the rain relate its own story. What does the poet do here? The poet makes the rain relate its own story, means the rain here relating its own story, narrating its own story. This direct presentation, who is presenting here, means the rain itself directly presenting what? Narration, directly narrating its own story in the way which is authentic, interesting and captivating. So authentic means which is genuine, you can say, or true way. Interesting, you know very well, that is very charming, and captivating means also very attracting or charming. So question number 2. Behind the apparent simplicity, the poem hides a deep meaning. What exactly does the poem convey to the reader? So behind the apparent simplicity, apparent means which is clearly visible. So the poem has, you know very well, poem is very simple. What is the meaning? That is clearly visible. But besides those things, the poem hides or the poem gives a deep meaning. What is that? And here through this poem, what does the poet wants to convey or the poem conveys to the reader, means what message do we receive, do we get from this poem? So the poem is not merely a description of life cycle of rain. It's not only description of the life cycle, but it has a deeper meaning. Rain is a poem और थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ. रेन क्या है? रेन अर्थ की एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटिफुल थिंग है, एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. सो इज सॉन्ग और म्यूजिक. जैसा कि सॉन्ग या म्यूजिक होता है, इन द सेम वे व्हाट इज रेन? रेन इज अ पोएम ऑफ अर्थ or a very beautiful thing. The comparison between rain and music and their function, here it's a comma, students, all right, it's a comma here. So the comparison between rain and music and their function, making the earth pure and beautiful, conveys the eternal role of natural phenomenon and art in real life. So what does the poet do here? Here the poet gives a comparison between rain and music. So what is music? Music is art. And what does the work is done by rain? That is making the earth pure. So the work or the function is done by rain is making the earth pure. How? You know what does the rain do? When the rain comes to earth, it washes all the dirt, all the dust particles from the plants, from the trees, from everywhere, means it cleans the earth nicely. So it is a natural phenomenon and art. Question number 3. How does the rain justify its claim, I am the poem of earth? In the poem, the rain says that I am poem of earth. So ये claim जो rain करती है, उसको justify कैसे किया जाता है? तो the rain narrates the journey of its life from birth to return to origin in mythical terms. So here in this poem, the rain itself narrates its own journey when it takes birth from
oceans, and again it goes to the sky, or you can say heaven, then again comes back to earth. So in a mythical way it narrates its own story or the journey of life. The facts are scientific, you know. All these things you must have studied in your science book. The process of evaporation, then condensation. So these facts are scientific, but the phrases that convey them are metaphoric and literary also. The whole journey has a beauty and charm associated with a poem. Means, what does the rain do? The function. What is the function? Function of purifying the earth. So it is associated with beauty and charm. The whole journey is associated with beauty and charm. So now let's see some long question answers. How is the cyclic movement of rain brought out in the poem, The Voice of the Rain? What points of similarity do you notice between rain and music? So, here the poet asks, the cyclic movement of rain brought out in the poem. What is that? How it is described in the poem? The poem name is Voice of the Rain. And what are the points which shows the similarity between rain and music? So the rain calls itself the poem of earth. It is everlasting and perpetual. Perpetual means the same, everlasting, or you can say never ending. So we know that it's a complete cycle, means the rain takes birth from oceans, it goes up into the sky, then again comes back into the to the earth. So it's a never ending process. It is something that cannot be touched. It originates from the land and the deep sea, then it rises upward to heaven, where it changes its form into a cloud, yet remains same in quality. So you know very well, means this rain originates from land and the deep sea, then again it goes to the sky, sky में जाती है, okay, वहाँ से there clouds form, बादल बनते हैं, but quality is the same. पूरा सर्कल चलता रहता है, वो पूरा साइकिल चलता रहता है, but quality is the same. From the sky it pours down on earth to wash the dry tiny particles and dust layer of the earth. तो ये sky से क्या करते हैं? It pours down on earth. क्या करते हैं? धरती पे वापस से उड़ेलते हैं. किसको? To wash the dry tiny particles and dust layer of the earth. Means जब रेन आती है, धरती पे आती है, तो वो क्या करती है? It washes away. किसको भगा देती है? सारे ड्राई टाइनी पार्टिकल्स होते हैं किस चीज़ के? धूल के, गंदगी के, डस्ट के, जो अर्थ पे जो लेयर्स बन जाती हैं डस्ट की, उसको साफ करके क्या करते हैं? अर्थ को बिल्कुल प्योर कर देते हैं. द रेन हेल्प्स द अनबॉर्न सीड टू स्प्राउट. सो दिस इज अगेन द फंक्शन ऑफ रेन. व्हाट डज द रेन डू? रेन हेल्प्स द अनबॉर्न सीड. अनबॉर्न सीड मीन्स विच आर अंडर द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर हैं, उन सीड्स को, विच आर नॉट बॉर्न येट, मीन्स जो अभी प्लांट बनके धरती से बाहर नहीं निकले हैं, उनको क्या करती है? उनको स्प्राउट करने में, उगने में हेल्प करती है. टू ग्रो करने में हेल्प करती है, ताकि वो धरती से स्प्राउट होके बाहर निकले. These seeds lay hidden and unborn under the layers of the earth. तो उनको, वो कहाँ छुपे रहते हैं? धरती के अंदर. एंड रेन जो है वो उसको हेल्प करती है क्या करने में? धरती की जो लेयर्स हैं उनसे बाहर निकालने में. रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओरिजिन, मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटिफुल. एंड रेन कहाँ से निकलती है? उसका बर्थ कहाँ पे होता है? लैंड एंड डीप सी. तो जहाँ से ये ओरिजिन इसका है वहीं पे वापस आती है, एंड जो अर्थ है उसको क्या बनाती है? प्योर एंड ब्यूटिफुल. रेन एंड म्यूजिक आर बोथ ब्यूटिफुल एंड लाइफ गिविंग. सो
यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है किसका, रेन एंड म्यूजिक का। तो कंपैरिजन में क्या है कि रेन जो है वो बिल्कुल म्यूजिक की तरह है, क्योंकि दोनों ही क्या है, बहुत, म्यूजिक इज़ वेरी सूदिंग एंड रेन ऑल्सो वेरी सूदिंग। क्यों? क्योंकि रेन क्या है, बहुत सबको एक लाइफ गिविंग, यू कैन से लाइफ गिविंग होती है, एंड दोनों ही बहुत ब्यूटिफुल है, म्यूजिक एंड रेन। दे आर एटर्नल सोर्सेज ऑफ जॉय एंड गो ऑन परपैचुअली। तो दोनों के दोनों क्या है, बहुत एटर्नल सोर्सेज, एटर्नल मतलब शाश्वत, यू कैन से नेवर एंडिंग सोर्सेज ऑफ जॉय। दोनों से हमको क्या मिलता है, जॉय, एंड गो ऑन परपैचुअली एंड कंटिन्यूसली, दीज थिंग्स गो ऑन, लगातार चलती रहती हैं। दे इंस्पायर इवन डोरमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स विद लाइफ एंड एक्टिविटी। तो ये इंस्पायर करती रहती हैं, ऑलवेज गाइड करती रहती है किसको, डोरमेंट ऑब्जेक्ट्स को। डोरमेंट का मतलब होता है विच इज़ अलाइव बट नॉट एक्टिवली ग्रोइंग, या आप कह सकते हैं इन हिंदी निष्क्रिय, ऐसी चीज़ों को या ऐसे पीपल को कंटिन्यूसली क्या करती है, लाइफ गिविंग है एक तरह से। तो लाइफ देती है एंड उसको एक्टिविटी देती है, यानी कि कुछ काम करने को इंस्पायर करती है। So students, thank you so much. Keep watching, stay connected with me. Thank you.